Good morning, children. Today we are going to finish exercise 8.1. So open your maths books on page number 97. Mention date and day. Yesterday we have done some concepts of ratio. And today we are going to start exercise 8.1 from sum number 7th. Sum number 7th is express each of the following in the simplest form. तो simplest form के लिए हमने क्या किया था? LCM सॉल्व किया था कि HCF? We have solved HCF to find out common factor, right? तो हम common factor solve करेंगे HCF की help से और you can solve these sums directly, right? So I am going to solve part A of sum number 7th. Express each of the following in the simplest form. 7 and 21. You can solve HCF or common factor. HCF of 7 and 21. 7 और 21 का HCF कितना होगा? We can solve it by using long division method. 7 3s are 21. Remainder is 0. So HCF is 7. Fine. So we can write 7 is to 21 as 7 divided by 21, means in the form of fraction. Now we will divide both numbers by 7. तो दोनों numbers को 7 से, so 7 is divided by 7, 21 is also divided by 7 as 7 is HCF. So 7 is divided by 1, 21 is divided by 7, 3, right? So ratio is 1:3. Fine. Now part B, 4:28. So HCF of 4 and 28 is 4 और 28 का LCM 4 7s are 28. HCF of 4 and 28 is 4, or you can say common factor between 4 and 28 is 4, right? So now we will divide 4 upon 28 by 4. तो दोनों numbers को 4 से divide करेंगे. 4 divided by 4 is equal to 1. 28 divided by 4 is equal to 7. So we can write it as 1:7. Right? Next part C, 6:42. HCF of 6 and 42 is 6 और 42 का HCF. We will divide by division, by long division method. 6 7s are 42. Right? So HCF is 6. We will divide both numbers by 6. 6 divided by 6 is equal to 1. 42 divided by 6 is equal to 7. So ratio is 1:7. Done. Now move to part D, 27:99. HCF of 27 and 99 is, तो अब हमें ये क्लियर नहीं है कि 27 और 99 में कॉमन फैक्टर क्या होगा. ए बी और सी पार्ट में ये चीज़ क्लियर थी कि कॉमन फैक्टर क्या है. सो वी विल सॉल्व HCF of 27 and 99 by using long division method. 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 27 into 3 is 81. 27 3s are 81. Subtract these numbers. 18 is remainder. Now 27 will become dividend. 18 1s are 18, 18 2s are 36, but 18 1s are 18. Subtract these two numbers.
9, then this remainder will become dividend. This divisor will become dividend. 9 twos are 18. Difference is 0. So HCF of 27 and 99 is 9. ये नंबर जो लास्ट डिवाइजर होता है वो HCF होता है. क्लियर. सो रेशियो इज 27:99. इनको हम दोनों नंबर्स को 9 से डिवाइड करेंगे. राइट. 27 को 9 से किया 3, 99 को 9 से किया 11. So ratio is 3:11. Now next is part E. 90:108. So HCF of 90 and 108 is 90 और 108 का हम HCF सॉल्व करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. 90 ones are 90. Subtract these two numbers. Now this remainder becomes divisor and this divisor will become dividend. 18 fives are 90. Remainder is 0. So HCF is 18. 90 divided by 108. 90 is divided by 18. 108 is divided by 18. So 90 को 18 से डिवाइड करेंगे 5. 108 divided by 18 6. So 108 को 18 से डिवाइड करेंगे 6. Right. So ratio is 5:6. Clear. Now next part F. 26:91. We will solve its LCM. HCF. HCF of 26 and 91 is. So 26 और 91 का HCF. 26 fours are 104. 26 threes are 78. Subtract these two numbers 13 and this will become dividend. 13 twos are 26. Right. So HCF is 2. 26 divided by 91. We will divide these two numbers by 13. HCF is last remainder. 26 को 13 से डिवाइड किया 2. 91 को 13 से किया 7. 13 sevens are 91. So ratio is 2:7. Clear? Now I am going to solve part I and J. Part I. 136:240. So HCF of 136 and 240 is. We will solve its HCF. 136. So 136 को 1 से करेंगे 136 and difference 10 minus 6 4. 3 minus 3 0. Then 1 minus 2. 2 minus 1 1. Right. Now this will become divisor and previous divisor will become dividend. 104 से डिवाइड करना है 136 को. सो 136 पर को डिवाइड करेंगे 104 से तो 1 पे ही जाएगा. सब्ट्रैक्ट 6 minus 4 2. 3 minus 0 3. राइट. नेक्स्ट 104. 104 को 32 से डिवाइड करेंगे 32 3s are. तो 32 को 3 से करेंगे 96. आप ये नंबर को ऊपर भी लिख सकते हो. तो 104 minus
104 minus 96 is equal to 8. And next 32 is the dividend. 8 fours are 32. Remainder is 0. Fine. So students, HCF in this case is 8. Done. तो ऐसे सम्स के लिए HCF सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है. अगर आप HCF सॉल्व नहीं करोगे तो आपको नहीं क्लियर होगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है. आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसे हमने कल सेकंड मेथड किया था. फाइन. सो रेशो क्या है? 136 अपॉन 240. तो 136 और 240 दोनों को डिवाइड करेंगे 8 से. फाइन. तो आप इसको साइड पर डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि 136 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है? 17. एंड 240 डिवाइडेड बाय 8 30. फाइन. सो रेशियो इज 17:30. It is simplest form, right? Next is part J, 112 and 128. So HCF of 112 and 128 is, so we will solve by long division method. 112 तो 1 पे जाएगा. 112 डिफरेंस 6 1. अगेन 112 क्या हुआ? डिविडेंड. तो 16 के टेबल में 112 आता है. चेक. यस 7 पर आता है. 16 7s are 112. रिमाइंडर इज 0. सो वी विल डिवाइड इट बाय 16. तो 16 हुआ HCF लास्ट डिवाइजर. यस. सो रेशियो इज 112 अपॉन 128. सो हम दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे 16 से. फाइन. तो 112 के टेबल 16 के टेबल में 112 आता है 7 पे, एंड 16 के टेबल में 128 8 पर. फाइन. सो रेशियो इज 7:8, which is our answer. Done. So students, I have solved part A, B, C, D, E, F, I and J, and you will solve G, H, K and L parts, right? Next is sum number 8. Find one equivalent ratio of each of the following. First is 1:9. So students, how to calculate equivalent ratio? We will multiply given ratio by 2, 3, 4 and so on. तो भी स्टेटमेंट में गिवन है कि हमने एक ही इक्विवेलेंट रेशियो कैलकुलेट करनी है. सो वी विल मल्टीप्लाई द गिवन रेशियो बाय 2. गिवन रेशियो इज 1:9 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 9. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1s are 2, 2 9s are 18. सो 2/18 is equivalent ratio of 1:9. 1:9. You will write here 2:18. आप यहाँ 2:18 लिख सकते हो because we are talking about ratio not fraction. So 2:18 is equivalent of 1:9. Next part is 6:11. So we will multiply this ratio by 2. 6:11 means 6 divided by 11 into 2 upon 2. 6 2s are 12 and 11 2s are 22. So 12:22 is equivalent ratio of 6:11, right?